ओके गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल जॉइंस एक्चुअली। सो बेसिकली जॉइंस जो है मोस्ट हॉट टॉपिक है विद इन द एसक्यूएल एंड ये मोस्ट डिमांडेड स्किल भी है। अगर आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या कोई भी डेटा रिलेटेड जॉब्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जॉइंस आना ही आना चाहिए। ओके, सो इन दिस वीडियो जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे हमारे ये 3 टॉपिक्स। फर्स्ट पॉइंटर इज वाई जॉइंस, हमें जॉइंस की ज़रूरत ही क्यों है एंड वाई वी हैव टू यूज़ द जॉइंस, इन विच सिनेरियो वी हैव टू यूज़ द जॉइंस। ओके, द सेकेंड पार्ट और द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस टॉपिक विल बी व्हेन टू यूज़ जॉइन, हमें जॉइन कब कब यूज़ करना है, कौन सा जॉइन कब यूज़ होगा एंड ऑल दोज थिंग। ओके, and the third pointer we will cover the topic how join actually works. Okay, so इसका क्या मतलब हुआ how join actually works? So basically हम syntax समझ जाते हैं, हमें पता होता है ओके लेफ्ट जॉइन से हम ये डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़ लिया। ओके, और हमें पता चल गया ओके लेफ्ट जॉइन से लेफ्ट जॉइन का डेटा लेंगे प्लस मैचिंग डेटा फ्रॉम द राइट टेबल लेंगे, राइट। बट वी डोंट एक्चुअली नो कि ये जॉइंस काम कैसे करता है, और उसके कारण जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने जाते हैं देन वी डू ब्लंडर्स। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक्चुअली वो काम कर कैसे रहा है कोई भी जॉइन, और उसकी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है आउटपुट देने के लिए। एंड व्हेन वी यूज़ joins just based on the syntax then we do the blunders. Okay, so ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सीख जाओगे, आप कोई भी SQL इंटरव्यू क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो बेस्ड ऑन जॉइंस। ओके, सो जॉइंस का आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा यहाँ से। सो पहले तो हम प्राइमरी चीज़ों पर पहले फोकस करते हैं। ओके, सो पहले यार हम देखते हैं कि ये जॉइन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सो आप कहीं भी इंटरनेट पे जॉइन सर्च करोगे SQL जॉइन, ओके, देन यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर definition. A join clause is used to combine rows from two or more table, okay, two or more table, always remember, based on the related column between them. So ये सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा है कि जॉइन हमेशा दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में लगता है। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो वन कंडीशन जो कि जॉइन के साथ एसोसिएटेड होता है, एंड दैट कंडीशन इज बिटवीन द रिलेटेड कॉलम्स और द कॉमन कॉलम्स बिटवीन दीज टू टेबल्स। इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि ये रिलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं। ओके, सो कितने तरह के जॉइंस होते हैं, राइट। सो अगर आप W3 स्कूल्स कभी विजिट किए होंगे वेबसाइट, देन यू विल फाइंड दीज टाइप ऑफ जॉइंस। सो इनर जॉइन क्या करता है, ये जो भी हम जॉइन का कंडीशन पास करते हैं, अगर वो कंडीशन मैच करता है तो वो दोनों टेबल से ओनली मैचिंग डेटा रिटर्न करता है। लेफ्ट जॉइन विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, राइट। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा ये रिटर्न करेगा, और राइट टेबल से ओनली मैचिंग पार्ट, जो आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना, ये सेक्शन जो कि मैच कर रहा है, जो भी हमने कंडीशन यहाँ पे पास किया होगा, कोई एक हमने कंडीशन पास किया, उस कंडीशन के साथ ये मैच कर रहा है। सो सिर्फ वही डेटा राइट टेबल से, दिस इज राइट टेबल एक्चुअली। सो एक्चुअली पहले जिस टेबल का हम नाम देखते हैं उसको लेफ्ट बोलते हैं, सेकंड को राइट बोलते हैं, राइट। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है और इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन वाला एरिया दिखा रहा है राइट टेबल से जो भी डेटा मैच कर रहा है। सिमिलरली राइट जॉइन, सो राइट टेबल का पूरा डेटा रिटर्न होगा एंड लेफ्ट टेबल से ओनली मैचिंग रोज रिटर्न होगा, एंड फुल आउटर जॉइन से दोनों टेबल का डेटा रिटर्न होता है। इसको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ओके, सो थिंग्स टू रिमेंबर जो है हमारे पास वो इस स्लाइड से ये है कि हमें जॉइंस के लिए क्या क्या चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंटर जो है, हमें जॉइन के लिए लाइक 2 और मोर देन 2 टेबल्स चाहिए। ओके, ये हमारा पहला कंडीशन है कोई भी ज्वाइन करने के लिए। हमारा दूसरा कंडीशन जॉइंस का क्या है, मैचिंग कॉलम होने चाहिए दोनों टेबल में। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दोनों टेबल में कोई एटलीस्ट एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो मैचिंग कॉलम होना चाहिए दोनों टेबल में। सो ये होता है हमारा ज्वाइन का 2 क्राइटेरिया। अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास है तो हम ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं।
ये हो गया जॉइंस. ओके, व्हेन टू यूज जॉइंस. सो हमेशा जो डेटा है वो हमें एक सिंपल फ्लैट टेबल में नहीं मिलती. ओके, लाइक एग्जांपल, एम्प्लॉय का एक टेबल अलग होगा, सैलरी का टेबल अलग होगा, डिपार्टमेंट का टेबल अलग होगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर. ओके, सो टू गेट द डेटा, लेट्स सपोज हमें एम्प्लॉय वाइज उनकी सैलरी चाहिए. सो एक एम्प्लॉय का टेबल हो गया, एक सैलरी का टेबल हो गया, राइट. सो दोनों टेबल से हमें डेटा फेच करना है, राइट. सो टू फेच द डेटा फ्रॉम बोथ टेबल, बिकॉज एम्प्लॉय नेम जो है वो हमारे एम्प्लॉय टेबल में है, सैलरी है हमारे सैलरी टेबल में है, तो इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करने के बाद एम्प्लॉय एंड सैलरी हम फेच करके आउटपुट में दिखाएंगे. सो दिस इज वाई वी यूज द ज्वाइन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, cross join. So before proceeding further on the joins and on the all the parts like left, right, outer joins, inner joins, right, we first need to know cross join. Why cross join? क्योंकि cross join जो है वो फंडामेंटल है, वो आपको आंसर देगा इस क्वेश्चन का, right? How joins actually work. So ये पार्ट आपको जानना है, तो you need to know first कि what is how cross join works. Okay, so basically cross join is nothing but one to many multiplication kind of thing. Whenever, कभी भी, जब भी कोई भी join, it doesn't matter you are using left join, right join, inner join, outer join, कोई भी join if you are using, right, cross join सबसे पहले होता है. This is how compiler works. And then जो भी हमने ये condition अभी हमने discuss किया joins की, ये सारे conditions, ये conditions cross join के बाद उस पर apply किया जाता है, और उससे फिर जो आउटपुट आता है वो हमारा फाइनल आउटपुट होता है किसी भी जॉइन का जो हम अप्लाई कर रहे हैं. सो लेट्स सी, हमें समझ में आएगा वंस वी गो थ्रू इट ना, वी विल गेट टू नो. ओके, सो लेट्स सपोज वी हैव टू टेबल्स. ओके, वन इज दिस स्टूडेंट टेबल एंड अनदर वन इज दिस मार्क्स टेबल. ओके, सो स्टूडेंट टेबल हैव टू कॉलम्स. ओके, नेम, roll number. We have names as Kiran, Rakesh and Modi, and we have roll number as 5, 3 and 2. We have this marks table here. Okay, we have this roll number over here again, because this is the common, like we discussed now, we need to have any common column name or any common column data, right? So this roll number and this roll number is a column, and this will be key to join this both table, like student table and marks table. Okay, so let's suppose first thing, whenever you do any join, let's suppose you have to fetch, like the question is marks obtained by each student. Let's suppose this is the question. Okay, so what happens is we do not have marks here, we have marks here, but we have roll number here and roll number here, right? So based on these two columns we will perform the join. First cross join will happen. Okay, so cross join is nothing but one to many relationship between these two tables, which will be something like this. Let me draw it for you. Okay, so let's take one table over here. Okay, so let's put all the names of column from these two tables, right? So from this student table we have name column. Okay, then we have roll number. Okay, and then from marks table we have this roll number and we have this marks. Okay, so let's draw a line. So remember, like from these two it's from marks, and these two are from a student. Okay, अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं just for simplicity. So what will happen? Cross join is nothing but this. It will put Kiran. Okay, and Kiran roll number is 5, and then in the marks we have 5 and we have 300. Again it will be Kiran 5 1 500 and so on. Just keep going, like okay, Kiran 5
because this one record will be mapped with all three of it, right? Okay, so this is the output of cross join, right? Now, so this is how cross join work. So one Kiran and 5 will be mapped with every individual row from this particular table. Similarly, Rakesh and 3, this particular rows will be mapped with all the rows from this table, and this particular row will be mapped with all the rows from this table. Now this is the first step when you write the join syntax. Now this is the first step that happens in the compiler. After that, after this step is done, okay, the compiler tries to map or try to apply the rule of this inner join, left join, right join, outer join. So let's take example of this particular left join. So left join, we know this all the records from left table will be selected and only matching records from right table will be selected. Okay, so let's go to the next slide. So let's carry this output of cross join to the next slide and try to map all the joins. So on this slide I have copied the output of the cross join, okay, and we will try to find out how left join, right join and outer join and inner join output is being generated from only this table, this output table. Okay, so let's suppose you try to do the left join, okay, and you try to get the name and the marks of the students. Okay, so the syntax of the query that you write is something like this. Okay, you will do select a dot name comma a dot, let's suppose we are just selecting the marks. Okay, so b dot marks from, okay, then you will put this student table, student as a, okay, then you will put like something like this, like left join marks, right, marks as b, and there is one condition that you have to put, which is the matching colon condition, right? So on keyword is used on a dot roll number is equals to b dot roll number. So this is actually a syntax of left join. Okay, so you have, we are selecting two things, name and the marks. Marks belongs to table B, which is the marks table, and name belongs to table A, which is the student table. That's why we have used the alias A and alias B to represent it. Okay, and then again we have joined this particular table based on the roll number. Okay, so let's focus on this particular pointer, like the roll number part. Okay, so what will happen is, let's try to solve or get the output of this particular query from this particular table. Okay, so what will happen is, the first thing is it will try to check whether the roll number is equals to roll number, like student roll number is equals to marks roll number. So first record it will pick and it will check, okay, this is 5, this is 5, and this is equals to, okay, these both are same, right? So it will just put first record as Kiran, okay, and the roll number will be 300. Again Kiran, it will check this, so it will find this, okay, this is not equals to this, like the student roll number is not equals to marks roll number, so it will not include this particular combination over here, right? Again it will check this 5 3, right? So 5 is not equals to 3, again this will not be included. So for Rakesh it will check, like Rakesh roll number is 3 and in roll number it's a 5, it's not equals to, it will not include it, it will not include this, and this 3 and this 3 both are equal, so the second record will be Rakesh and the output will be 450. Okay, the third step. Okay, so it will check this Modi, right? So it's not present in the roll number, like this roll number 2 is not present here, right? So this doesn't match.
this row doesn't match this two columns, okay, and these two columns doesn't match. So what will happen? There is no matching, right? But it's a left join, and the rule of left join is all the data from left table will be there and only matching data from right table will be there. So Modi is in left table, so it will be there, but there is no matching data in the right table. There is no roll number 2 in this particular table, so it will have simply a null. So when you perform this left join, you will get this as an output, okay? You will get this as a name, okay, and it will be marks. Okay, now let's move to the right join. Okay, so what happens in case of right join? So we know in right join we get the data from right table and matching data from left table. That's the condition. Okay, so if we look at this particular query over here, like it will have the same query. Okay, select a dot name comma b dot marks from student, okay, as A. Now here it will change to right join marks as B on, okay, A dot marks is equals to B dot marks. Alright, so in case of right join, again in this table, this is student is a left table and this marks is a right table, right? Similarly over here also it's a left table and this is marks as a right table. So when we try to run this particular query, okay, so let's find out what will be the output of this query using this particular cross join table. Okay, so what will happen is it will again do the same thing. It will check whether this is equals to this, like this roll number is equals to this roll number, and it will find, yeah, these two are equal. Okay, so it will output something like this, Kiran and 300. Again it will check 1 is equals to 5, so it's not equals to 5, right? There is no value that corresponds to this, so this will be crossed. Okay, again, but let's move on to this next one. Okay, so this 3 is not equals to 5. Okay, this 3 is not equals to 5, 3 is not equals to 3, 3 is equals to 3. Okay, this 2 is not equals to 5, this 1 is not equals to 2, and this 2 is not equals to 3. Okay, so let's select from here which are the data that are equals to something and isn't not equals to but is in right table. Okay, so Kiran is equals to something, right? So if we talk about this one, right, so one roll number does not exist in this particular table, in the left table, right? So we will get 1 and null value over here because we do not have any corresponding data for roll number 1. Okay, for roll number 3, I think we have one corresponding data which is Rakesh, right? So we will get roll number 3 and we will get Rakesh, right? Similarly, for roll number 5 we already got the data, right? For 1 we already got the data, this 1 and null, and for 3 I think we already got the data. Okay, so this will be the output of right join when you perform a right join on these two tables. Okay, so this cross join is what compiler does at first. Okay, and once all the mapping, one to many mapping has been done from left table and the right table, right, then it's pretty easier for it to apply these rules, like whatever the rules are. For left join we have certain rules, right? We have this rule, so this rule. For right join we have this rule, right table and only matching values from left table, right?
For full outer join also, what will it output? It will output all the data that are present in the table actually. Okay, for inner join, all the matching data that are present in the table. So if we try to implement inner join also in this scenario here, okay, let's get some space over here and try to implement inner join. Okay, so in case of inner join, we know all the matching data should be returned. So in this scenario for inner join, we have this data as a matching data, right? And we have this data as a matching data. Okay, so what it will output? It will output something like this: Kiran and 300 and Rakesh as 450, right? So when you try or when you start thinking the joins in terms of this, like in terms of this cross join feature, you will never miss the way it works and the output it will generate, that can be easily determined or that can easily be predicted. Like what will be the output of this two tables, or if we apply like this: left join, right join, inner join, or end join. So cross join is a backbone of it, and that's the main thing you need to know in the join. Once you know how it works, you can apply any kind of join, any number of join on any number of tables based on any number of conditions. So I think that's it for today. If you find this video helpful, do share with your friends and subscribe the channel. Thanks.